everyone. So this is day one of my daily vlog series for the month of July, and I already did my morning stuffs like brushing and all, and now it's 6:30 a.m. and I thought of waking up early morning today, like around 5:30, but I had to wake up a way before than that, like 3:30, 3:40, because I had a tooth pain and I had to take painkiller without having a food. So I thought of waking up early just to go to gym before going to office, because today is Tuesday and I have work from office. I didn't want to go in the evening because I become too tired after coming from office, and again I have to cook because I stay in a PG. It's a like self cooking PG, and I don't get enough time. I get tired mostly. That's the main reason. But since I am unable to go because I'm having some digestion problem, like I'm not feeling good enough to hit the gym right now, so I will be doing 15 to 20 minutes meditation, because as you can see the weather is सो अमेजिंग एंड अभी बहुत दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि सुबह उठने का जो मज़ा होता है, लाइक स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ऑल्सो, यू फील सो काम एंड पीसफुल. इट्स रियली पीसफुल. तो आई एम गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन माई मेडिटेशन. उसके बाद आई विल प्रिपेयर समथिंग फॉर माई लंच विच आई एम गोइंग टू शो. तो ओके, लेट्स नॉट डिस्कस एनीथिंग हियर. लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द वीडियो. Hello. So after meditation, I directly came to kitchen, and this is the kitchen of our PG. Rate it. Okay, that's not the content. So I'm preparing my lunch. Today I'm preparing a typical simple Bengali tiffin, which I used to have a lot in my school days, which is known as bhat bhaja. So basically, what we do is we fry a potato. As everybody knows, potato is our favorite, Bengali's favorite potato in everything. So we prepare rice and then we mix it. It's kind of pulao, but in pulao we generally don't use potato, but here I'm using. So it's bhat bhaja, and here you can also add scrambled eggs. But since I'm having veg for a month now, so I haven't added it. So this is simple, easy to cook, and now I'm going to take shower. But uske pehle, let me show you my room. Alright, so I already took shower and I prepared my lunch. Now I'm going to give puja. So before that, since I'm staying in a PG, self-control PG, and I'm sharing room with two other people and they're not here, I would love to give a small room tour without their permission. So I'm just going to focus on my portion. So this one is my bed, and I really love this print. I love kolka. In Bengali we called it kolka, and I purchased this from DMart as usual, and I gave for washing, like these pillow covers I gave for washing. So and this is the wall, some coats, and this bag. There was an event in my office, so I painted it. It's still incomplete and it's not good as well, but yeah, I loved uh, doing that activity. Anyway, so this is my favorite spot. This is my everything actually, where I cry, where I pray, and the people who are there in Insta, they have seen this. They see this all the time. Like I keep on posting stories. Now weekend was there, so I was too lazy to put all these things inside. This one is a storage box. Like I purchased this from Misho, so that I can keep my stuffs in an organized manner. Because इतने से जगह में नहीं fit होता है यार, मुझे तो पूरा room ही चाहिए अपने लिए. Anyways, so this is my beautiful plant which I gifted to someone, and then they had to like go to some other city. So now they gave it back to me and I'm taking care of it. तो यही बस था. This is my favorite wind chime, जो अभी ख़राब तो हो चुका है. Purchase is from Gangtok. And also I would love to show इसका जो ambience है after turning this on. This is the thing. तो रात को ये बहुत ही सुंदर लगता है. Like seriously, I do have a star here. I forgot who gave me that. I think it's, yeah, for my birthday. My beautiful PG Meds version, and who purchased that. So yeah, this is my space. I'm not going to show their space. And this is my cupboard, my bean bag, जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं, and I have to, all are washed ones, but I have to iron them. This is the hall area. Hello people. And this is my favorite spot again, balcony and my plants. So basically I purchased this too, Tulsi, and I don't know whose is this, but I do puja for all of them, and I also keep water. I don't know who gave so much water here. I really, रात को कौन पानी देता है यार, रात को ये पूरा ना भरा हुआ था. Anyways, चल, I'm getting late for office today. So this is my Bhumka box.
बहुत सारे हैं मेरे पास, आई हैव लॉट ऑफ जिम कार्स, बट राइट नाउ मुझे जो चाहिए वो टाइम के वक्त कुछ नहीं मिलता। आई थिंक दिस विल गो विद दिस, इज इट लुकिंग टू बहन जी टाइप्स, आई डोंट नो, आई कांट फिगर इट आउट व्हिच वन टू वेयर। Okay, I will go with this studs, small ones, small ones. Yeah. मुझे तो फर्स्ट डे पे ये सब वीडियो बनाने के चक्कर में लेट हो गया। आई रियली डोंट नो हाउ पीपल मैनेज एवरीथिंग। I just wore this kurti and jeans because I got late and मुझे भी I generally don't wear formals उतना until unless I have an event, क्योंकि मुझे comfort चाहिए। Like formals are comfortable too, but वो थोड़ा होता है ना कि oh my god। हाँ ऑब्वियसली वेदर तो काफ़ी अच्छा होके रखा है इधर, एंड आ गए हम हमारे घर पे, सेकेंड होम। लाइक रियली आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ लैपटॉप। 12 बज गया और मुझे भूख भी लग गया, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू हैव लंच बिकॉज लंच तो पूरे टीम के साथ होने वाला है। आई एम गोइंग टू हैव सम केक और चाय। तो क्या हुआ ना कि मैं सॉलिड चीज़ें नहीं खा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई टूडे, एंड राइट नाउ आई एम हैविंग मैगी। आई नो इट इज़ नॉट हेल्दी एंड काफ़ी लाइक नॉट काफ़ी दिनों से, बट सिंस लास्ट 3 days, not continuously, but हाँ last 3 to 4 days I'm having outside food. Like I had burger, I had outside food, even though it's healthy but still it's outside food. So like I'm not that kind of person कि continuously खाए, but since my mood was off and जब मेरा mood off होता ना तब मेरा मन करता है waffles भी खाया था मैंने, और बात भी नहीं कर पा रही मैं सही से। मिठाई खाई थी बहुत सारा, तो मे बी waffle उसमें आइसक्रीम भी था, एंड what I do is I eat a lot when I am not feeling good emotionally, I eat a lot, तो इसलिए और ज़्यादा खा ली थी। एंड नाउ इट्स लाइक 12-10 एंड आफ्टर 1 hour लंच टाइम हो जाएगा, बट स्टिल आई एम हैविंग दिस क्योंकि लंच टाइम पे मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, लाइक राइस और आई डोंट नो हाउ विल आई गो टू जिम टुडे, मुझे अगर फिर से दर्द स्टार्ट हो गया अगेन इफ आई हैव टू टेक पेन किलर, तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। एंड दिस थिंग इज़ हैपनिंग सिंस लास्ट 2 to 3 months, 3 months। जब घर जाऊँगी तभी मैं इसको ठीक कर पाऊँगी, लाइक आई नीड टू रिमूव द टूथ कम्प्लीटली, एंड आई डोंट वांट टू टेक रिस्क हियर। आई वांट टू गो होम, आई वांट टू डू दैट। दिस इज सो बैड। आफ्टर 2 to 3 days the periods will come, I don't know but which pain is more, period वाला या periods का। Seriously last time also the same thing happened। Hello everyone, तो yesterday I couldn't complete the video because I was really not feeling well for my tooth pain. I went to gym क्योंकि पेन किलर ऑलरेडी आई टुक, सो तब पेन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ हेवी वर्कआउट नहीं करेंगे, आई विल जस्ट लाइक फॉर एटलीस्ट 40 minutes आई विल गो एंड कम। सो आई डिड द सेम थिंग। Okay, I had cornflakes, milk cornflakes, because I wanted to have something soft and hot, ताकि मेरा टूथ मतलब ठीक रहे। I was not willing to have a rice even, एंड ऑल्सो लाइक खाना बनाने के भी मन नहीं कर रहा था, ऑर्डर करने का भी मन नहीं कर रहा था, बिकॉज अगेन इट विल बी आउटसाइड फूड, सो आई डिडंट वांट टू गो फॉर दैट। और अभी मैं उठी हूँ सुबह, कल रात को भी पेन आया था ज़बरदस्त वाला, एंड आई टुक मेडिसिन yesterday night also. So yeah, this is how I'm ending my first day. I'm shooting this video today like next day morning, but ऐसा ही मेरा दिन हुआ था। So previously I used to put a proper thumbnail, intro photo, फिर thank you for watching, ये वो सब। This time I'm not going to do any of those things, at least not right now। अगर मेरा तबीयत सही रहता तो फिर भी मैं कोशिश करती, but not today, not this week। चलो, बट स्टिल मैं इन पर्सन आई एम सेइंग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई डोंट नो, शायद 1 या 2 बंदे नहीं देखा होगा इसको, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आज का दिन का शुरुआत ऑलरेडी मैं वीडियो कर चुकी हूँ उठते ही, एंड उसका भी आएगा आज, सो आई एम अपलोडिंग दिस लेट, बट ठीक है, चलता है। चलो बाय बाय, टेक केयर।